Hello everyone. This question appears in Class 7th NCERT Chapter of Perimeter and Area. This is fifth question of its exercise 11.4. So the question says that a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the area of the path, the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. So हमारे पास एक स्क्वायर गार्डन है जिसके हमें साइड गिवन है 30 एंड पाथ है हमारे पास एक जो 1 मीटर वाइड है। सो हमारे पास गार्डन की डायमेंशन हो जाएगी 30 बाई 30 एंड पाथ की डायमेंशन हो जाएगी 1 गिवन है हमें वाइड। सो इनर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज यहां से भी 1 और यहां से 1 माइनस हो जाएगा तो 30 माइनस 2 इक्वल 28। सेम ये भी स्क्वायर होगा सो 28 इसकी चारों साइड्स हो जाएंगी। सो हमें एरिया फाइंड आउट करना पाथ का। सो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ। सो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन is equal to side square is equal to 30 square is equal to 900 meter square and area of square garden without path is side square is equal to 28 square is equal to 784 meter square. So area of the path is equal to 900 minus 784 is equal to 116 meter square. So first part complete हो गया and in second part the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. So the cost of planting grass for 1 meter square is equal to 40 rupees एंड हमें प्लांट करनी है 784 बिकॉज ऑफ हम पाथ पर ग्रास प्लांट नहीं करते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास फॉर 784 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 784 इंटू 40 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 4 8 जा 32 and 7 4 जा 28. So 31,360 rupees. So area of the path is 116 meter square and the cost of planting grass in the garden is 31,360 rupees. Thank you.